हेलो स्टूडेंट्स, आज लर्न करेंगे बेटा। आज समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फॉर्मूले हैं, किस सिंबल का क्या मीनिंग है, क्या यूनिट है, कैसे यूज करना है। चलिए रिकैपिचुलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले। द फर्स्ट फॉर्मूला इज टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, also known as quantization of the charge. Q symbol represents total charge present in a wire. Total charge, total number of electrons, total number of protons. Although we have electrons in the wire, लेकिन जहाँ chemical electricity होती है, chemical electricity generate होती है, there positive and negative both ions are present which carry the electricity, which conduct the electricity. So Q represents the total charge. N represents number of electrons present in the wire. ये unitless quantity है क्योंकि number है. E represents charge on the one electron, which is 1.6 into 10 power minus 19. तो इसकी unit coulombs, इसकी unitless, तो total unit of Q is also coulombs. I equals to Q by T. Electric current flowing through a wire. I represents electric current flowing through the wire. Q represents the total charge present in the wire. T represents the time taken by this charge to cross the battery terminals. Electric current is equal to the charge passing through the wire per unit time. Q की यूनिट coulombs, T की यूनिट seconds में, तो करंट की यूनिट बनती है coulomb per second, but coulomb per second is replaced by another unit which is ampere. Ampere. V stands for voltage, also known as the potential difference. V is equal to the work done in carrying a unit charge across the resistor. एक रेजिस्टर से क्रॉस करते हुए कोई भी एक कूलम चार्ज कितनी एनर्जी रिलीज करके जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बैटरी के एक टर्मिनल से निकल के दूसरे टर्मिनल में वापस आने तक कितनी एनर्जी एक कूलम चार्ज रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. इन स्पाइट ऑफ वर्क डन हम हीट भी कंसीडर कर सकते हैं. वर्क डन की जो यूनिट बनती है दैट इज जूल्स. W और H represents the work done. W represents the work done. Q represents the energy. As you know, work done is equivalent to energy. तो हम यहाँ E और H, these two symbols are used for energy difference or energy change that is occurring across the resistor. Q represents the total charge. Unit of Q, coulombs. Unit of heat और work is joules. तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट आएगी दैट इज जूल पर कूलम. जूल पर कूलम इज रिप्लेस्ड बाय वोल्ट्स. तो V, which is potential difference, has a unit of volt. Now this is Ohm's law. Potential difference across the wire is directly proportional to the current flowing through the wire, where R represents the proportionality constant known as resistance. I represents the current flowing through the wire and V represents the potential difference in the wire. Potential difference की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर. पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर. तो इसके अकॉर्डिंग द रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर करंट, वोल्ट पर एम्पियर, but this unit is generalized as the ohms in an honor of scientist Ohm who gave Ohm's law. Unit is ohms. R, which is the proportionality constant in Ohm's law, is directly proportional to, it depends on certain factors, it is directly
proportional to length of the wire, L represents the length of the wire, तार कितनी बड़ी है, inversely proportional to area of cross section, area of cross section, तार कितनी मोटी है, पाई आर स्क्वायर, आई एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज पाई आर स्क्वायर, बिकॉज width of the wire is the circular dimension of wire, which is generally given by pi r square. Rho represents the specific resistance, which is proportionality constant. R is directly proportional to length of the wire, inversely proportional to area of cross section. अगर हम proportionality हटाते हैं तो constant लगाते हैं. R proportional to L by A can be written as R equals to rho L by A. Now, unit of length is in meters, area is meter square, resistance has a unit of ohms represented by this symbol. अब इन यूनिट से अगर मैं रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट निकालूंगी तो दैट विल बी ओम्स मीटर, लेंथ ओम्स में, एरिया मीटर स्क्वायर में और रेजिस्टेंस ओम्स में, तो रेजिस्टिविटी आएगी आपकी ओम्स मीटर्स. Now when the two resistors are connected in such a manner that current flowing through a wire passes through the another wire, they are connected via one point, then this type of connection is called series connection. Series connection में the resistance is equal to the sum total of resistance of two different resistors. अगर मैं दो resistor को सीरीज में कनेक्ट करती हूँ तो इस पूरी वायर की जो इफेक्टिव या कंबाइंड रेजिस्टेंस बनेगी दैट विल बी दी सम टोटल ऑफ बोथ द रेजिस्टर्स R1 एंड R2. अगर तीन रेजिस्टर हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, चार रेजिस्टर हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. तो दिस इज द रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस. पूरी वायर की क्या रेजिस्टेंस होगी? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग सर्टेन रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. तीन चार रेजिस्टर अगर सीरीज में जोड़ दिए जाएं तो पूरी वायर की क्या रेजिस्टेंस बनेगी? इन सब की रेजिस्टेंस को टोटल करके जो रेजिस्टेंस आएगी वो बनेगी RS equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4 and so on. If the two resistors are connected in parallel connection, then in parallel connection these two resistors give a, when two resistors are connected in parallel connection, these two resistors when combined in parallel give an effective resistance which is the reciprocal sum of the two resistances. 1 by Rp parallel resistance is equal to 1 by R1 resistance of the first resistor plus 1 by R2 resistance of the second resistor. If three resistors would have been connected, then 1 by Rp equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. If there are four resistors in such combination, then 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4. अगर दो ही रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो 1 upon Rp is equal to R1 plus R2, R1 into R2, LCM ले लेंगे R1 into R2, ये LCM लेकर आए. अब इस LCM को हम रेसिप्रोकल करें तो resistance in parallel combination is equal to product of the two resistors by sum of the two resistors. ये रिलेशन हमें LCM लेकर मिलता है. Now next are the formulae to calculate heat or the work done. According to Joule-Sitting law, heat or the work done by a wire is directly proportional to square of the current. जितनी देर के लिए करंट देंगे उसका स्क्वायर, जितना करंट होगा उसका स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द करंट हैज बीन गिवन. तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे
तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वल लगाएंगे विच इज के I स्क्वेयर आर इंटू टी। यहाँ k की वैल्यू 1 है, इसलिए हीट किसके इक्वल हो जाएगी? I स्क्वेयर आर इंटू टी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। करंट की यूनिट एम्पियर, आर की यूनिट ओम्स, टाइम की यूनिट सेकेंड्स और हीट की यूनिट जूल्स। अब ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। V इक्वल्स टू I इंटू आर। If I replace I will be replaced by voltage upon resistance। तो I की जगह अगर मैं पुट करती हूं हीट इज इक्वल टू I स्क्वेयर R इंटू टी। तो I को रिप्लेस करिए V स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर इंटू R इंटू टी। R से R कैंसिल, द फॉर्मूला विल बिकम V स्क्वेयर बाय R इंटू टी। नाउ रिप्लेसिंग R is equal to V upon I, again using Ohm's law. Heat is equal to replace R, I square V upon I multiplied by T. तो V into I into T denominator में 1. These three are the formula of heat released by a resistor, derived according to Joule's heating law. Now, as you know that power is equal to heat or the work done by time taken, where heat or the work done is in joule, time is in second. The unit will become joule per second, which is generally called as watt. हीट के 3 फॉर्मूले पुट करते जाएंगे सीक्वेंस में। हीट का फर्स्ट फॉर्मूला I स्क्वेयर R इंटू टी। टी से टी कैंसिल होकर फॉर्मूला बचेगा I स्क्वेयर इंटू R। Put heat as I square R into T by T, the formula becomes I square R. Put the second formula of heat, V square upon R into T by T, the formula becomes V square upon R. Put the third formula of heat, VIT by T, T से T cancel, आपका formula बन जाएगा V power equals to V into I. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर रहे हैं, कमर्शियली एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं कितना यूज हुई है, तो एनर्जी की यूनिट जूल्स की बजाय कौन सी यूज होती है? किलोवाट इंटू आवर्स, विच इज जनरली टर्म्ड एज यूनिट ओनली। इस यूनिट को बोलते ही क्या है? यूनिट। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अगर पावर वॉट में और टाइम सेकेंड्स में है तो एनर्जी की यूनिट बनती है जूल। अगर पावर किलोवाट और टाइम आर में है तो एनर्जी की यूनिट बनती है किलोवाट आर। तो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट इंटू आर एंड जनरली कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला E इक्वल्स टू P इंटू टी, वेयर पावर इज टेकन इन किलोवाट एंड टाइम इज टेकन इनटू आवर्स। थैंक यू।